Can you speak something about you? I'm Kunal. I belong to Bihar. I studied from Odisha, where I grown up. I studied till 10th there in Kendriya Vidyalaya, Jharsuguda. Then I went to Ranchi for JEE preparation, and there I studied 11th and 12th. And then after I joined IIT Kanpur in mechanical engineering. I graduated in 2022, and then after I worked for 3 years, around 3 years in software industry. Then I thought I will prepare for public sector. Can you tell me some your 5 favorite subjects? Be strength of material, Okay. fluid mechanics, Mm-hmm. thermodynamics, Mm-hmm. heat transfer, and engineering mechanics. Engineering mechanics. So much thinking you are doing just to select 5 topics. You're thinking they should come out just like that, na? Because these topics are your favorite topics. Why this phenomena that is called yield point phenomena doesn't appear in medium and high carbon steels? Why this phenomena doesn't appear? Only in the low carbon steel, why? I think because in high carbon or medium carbon steel, the amount of carbon present in the industrial side are almost equivalent everywhere. So they prevent equally to move the dislocation line. So there is no bottleneck. I have a question. In binary phase diagram, it is C+1, not C+2. Why it is so? Because pressure is fixed. Pressure is not a variable. Pressure, I think we take as atmospheric pressure. Okay, very nice, because that's we are constraining. Suppose the same phase diagram if I plot on Moon or Mars, what difference you will observe? Same iron carbon phase diagram or any other phase diagram, I want to plot at Moon or let us say Mars. What will be the difference? That environment, there is less gravity, there is less atmosphere. But how are they going to affect the iron carbon state? Okay, my last question is why additive manufacturing is so popular, especially in the aerospace applications? Additive manufacturing, why this technique is so important in aerospace applications? Can you spell out some applications recently in the news? And what is so special about this? So the major advantage is that we are not losing on the material because we are making the material from and I think complex geometries can be made easily with additive manufacturing. See, complex geometries can be made where multiple processes are used. Here the single machine will make it. But the most important advantage is any material property depends upon its crystal structure. So now with the help of additive manufacturing, we call it functionally graded material, this particular area. Whatever geometry and crystal structure we need, we can print it in the material. This area is called functionally graded material. So let us say some materials are highly corrosion resistant, but they are not creep resistant. We can print that structure in that material by the help of especially stereolithography, let us say. So your area of interest is thermodynamics and fluid mechanics. So if I give you 2 cylinders, right, 2 distant cylinder arrangements are there, and in both cylinders, same mass of gas is filled, same gas, same mass, same initial temperature. 2 piston cylinder arrangements are there, same mass, same gas, same initial temperature. We are supplying some amount of heat to in both. We don't know how much amount, and final temperature is also same. The only difference is in first case the piston is blocked and second case piston is free to move. So in which case more amount of heat will be required.
in the case that piston moves, because Why? there is some work is also happening, Which work? boundary work. The piston is gas is doing the work on piston Okay. and environment. And in first case, In the first case, there is no work. Only the heat is going to increase the temperature of the gas. fine. The next question is, let's say if one container is there, right? And that container contains some fluid, and it is moving with some acceleration of 10 meter per second square. In that case, which side of the container have more pressure or force? So the fluid will incline in the opposite direction of the acceleration because of the inertia force. It will be inclined, and so the pressure in the opposite direction of acceleration, in that there will be high pressure because there is high gradient of there is high height of liquid. Okay, what about what is the viscosity, like change of viscosity with respect to temperature? Yeah, for liquid it decreases, and for gases it increases with Why? because for liquid the viscosity is mainly due to the intermolecular forces, and intermolecular forces decreases with increase in temperature, and for gases it is mainly due to molecular collision, and that will increase due to increase in temperature. There is less intermolecular force. मैं एकदम सिंपल वे में पूछ रहा हूँ. एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, उसमें 3 एक्सिस है, एक्स वाई और जेड. एक्स और वाई उसका अलोंग एक्सिस है, सब सेंट्रॉइड से पास हो रहा है, और जेड उसका परपेंडिकुलर एक्सिस है. तो शियर फोर्स किस एक्सिस के अलोंग लगेगा? बेंडिंग मोमेंट भी एक्स और वाई किसी में के. You can give a very simple definition. Shear force is the force resistance which acts along the axis. अच्छा, एक बीम, पेन और पेपर रखा है ना, एक कैंटिलीवर बीम ड्रॉ करना, यस उसे फ्री एंड पे कंसंट्रेटेड लोड अप्लाई करना, यस. उसका शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग डायग्राम कैसे बनेगा? एसएफडी और नीचे भी साथ में पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड भी लग रहा है. अब साथ में यूडीएल भी अप्लाई कर देना ना, पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. और पी भी है. हाँ, पी भी. एसएफडी ऊपर है. अच्छा, मेरे को ये बताना, इसका फ्री एंड पे बेंडिंग डायग्राम का स्लोप कितना है? बेंडिंग डायग्राम का स्लोप किसके बराबर होता है? शियर फोर्स के बराबर. फ्री एंड पे कितना है शियर फोर्स? पी है. जीरो कैसे हुआ? पी होगा ना. हाँ सॉरी, पी होगा. और फिक्स एंड पे? फिक्स एंड पे पी प्लस डब्ल्यू एल. अच्छा ठीक है. ये जैसे वाटर की बोतल है, इसमें ये इस एच हाइट तक हम लोग का पानी भरा हुआ है, ठीक है. ठीक है, वो फ्री सरफेस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक है. मैं बोतल को इस तरीके से पकड़ा हूँ, ठीक है. फ्रॉम फ्री सरफेस टू बॉटम सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? कांस्टेंट होगा, वो वेरी करेगा, या जीरो होगा? और वेरी करेगा तो कैसे वेरी करेगा? तो थिन सिलेंडर टाइप है ये, तो थिन सिलेंडर, ठीक है. तो उस पे हुप स्ट्रेस पीडी बाई 2t होता है. लेकिन प्रेशर वेरिंग है, तो हुप स्ट्रेस भी एज प्रेशर वेरिंग होगा, मतलब हाइट के साथ इंक्रीज होगा. कैसा ग्राफ बनाना उसका, वेरिएशन का? लीनियरली इंक्रीजिंग ग्राफ होगा. ठीक है. और सर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस? वो भी लीनियरली इंक्रीजिंग. जो फ्री सरफेस पे है वहाँ प्रेशर जीरो है, हाँ, पर उतने नीचे का जो वाटर का वेट है उसको सपोर्ट करेगा, तो वेट डिवाइड बाय पाई dt वहां का स्ट्रेस हो जाएगा. जैसे अगर मैं यहाँ का निकालूंगा, मान लीजिए मिड लेयर है, मिड लेयर में कम वाटर को सपोर्ट करेगा, बट वहां पर प्रेशर भी तो आएगा. प्रेशर उसको, हाँ, तो उसको क्लब करेगा तो कांस्टेंट ही आएगा. बॉटम का लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कितना होगा? बॉटम का लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस होगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस तो आई थिंक चले जाएगा
सारा सपोर्ट वेट का नॉर्मल 0 होगा हाँ, और सरकमफ्रेंशियल वो रहेगा ऐसे ही। तुम आंसर ठीक दे पा रहे हो, अंडरस्टैंड ना, 80% क्वेश्चंस के आंसर ठीक दे पा रहे हो, कंसेप्ट ठीक है, पर वे ऑफ प्रेजेंटेशन अगर थोड़ा सा इंप्रूव कर लो। बोर्ड ऑफ रिसर्च इन न्यूक्लियर साइंसेस, इसमें एक्चुअली आईआईटीज के प्रोफेसर रहते हैं, बट आई फील योर आंसर्स आर गुड। वे ऑफ प्रेजेंटेशन इफ यू कैन इंप्रूव, आप थोड़ा हर भी जो भी टॉपिक पढ़िए उससे क्वेश्चन खुद फ्रेम करिए कि व्हाट इज दिस, व्हाई इट इज लाइक दिस, राइट, हाउ इट इज वर्किंग, राइट, व्हाई वी आर डूइंग लाइक दिस, करेक्ट। ये क्वेश्चन आप बनाइए अपने आप से और इनके जवाब आप खुद दीजिए प्रॉपर तरीके से खुद, ना, इसका प्रैक्टिस और बोल के बोलिएगा। मतलब जब आप ऐसा मन में मत सोचिएगा दिस, आप अपने आप से खुद से बोलिएगा तो हो जाएगा। वैसे लैंग्वेज का वहाँ कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आता है, बट वही है कि कभी कभी अटकना, कभी कभी ठीक होना ठीक लगता है। हर चीज में अटकना फिर उनको थोड़ा सा डाउट आने लगता है। यही बोलूंगा, एक तो तू 5 सब्जेक्ट क्या क्या बोलने लगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, यही है ना? ये 5 सब्जेक्ट तो अपना नोट कर ले कि इसी को पढ़ना है। और मैं ध्यान देगा, तू थर्मोडायनेमिक्स बोला था, मैं बेसिक थर्मोडायनेमिक्स बोला, तो एक ये डिफरेंस क्रिएट कर लेना अपने जब सब्जेक्ट बताएगा, तो प्रॉपर बेसिक थर्मोडायनेमिक्स बोलना, ठीक है? दूसरा, ये पांचों सब्जेक्ट में ना जो तेरा सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है फिर उससे शुरुआत कर, तू कर पढ़, अभी तेरे पास टाइम का कमी नहीं है, 14 मई को है तेरा इंटरव्यू, तो सफिशिएंट टाइम है। तो जो भी तेरे को लगता है कि मेरा बेसिक थर्मोडायनेमिक्स सबसे स्ट्रॉन्ग है, तो उससे स्टार्ट कर पढ़ना, ठीक है? तो उसका जैसे सर बताया, तो उसका नोट्स ले ले और उसका एक स्टैंडर्ड बुक ले ले। तेरे को पता ही होगा जो कॉलेज के समय पढ़ा होगा या गेट की तैयारी में कोई स्टैंडर्ड बुक रिफर किया होगा, तो वो अब जैसे क्लास के नोट्स में जो टॉपिक है ना, अलग से कोई टॉपिक अभी नहीं पढ़ना है, बट जैसे जो भी क्लास के नोट्स में टॉपिक है उसको एक बार उससे देख और उसको एक बार बुक के थ्रू भी देख ले। बुक से पढ़ने से थोड़ा सा क्या होता है ना, चीजों को एनालाइज करने का पावर और ज्यादा बढ़ता है, ठीक है? और उसमें से उस पर्टिकुलर चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन तू खुद से बना ले कि क्या क्या बन सकता है, और उनको अपने आप को या किसी को बैठा के एक्सप्लेन कर, तो तेरा एक तो कम्युनिकेशन वाला पार्ट भी इंप्रूव होगा और वहां इंटरव्यू में भी तेरे को उससे हेल्प मिलेगा। जैसे ही थर्मोडायनेमिक्स के लिए ये कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट में आ जाए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो भी तेरा स्ट्रॉन्ग है उसके बाद, और उसका भी वही क्लास नोट्स और बुक। टॉपिक बुक से कोई नया नहीं पढ़ना है, जो क्लास नोट्स में उसी टॉपिक को पढ़ना है। इस चीज को कर, मैं तेरे को गारंटी दे रहा हूँ तेरा इंटरव्यू काफी अच्छा जाएगा, ठीक है? अगर इंटरव्यू में ज्यादा अटक रहा है तो तू बोल देना कि ये मेरा नेचुरल है, मतलब इस चीज को फिर उन लोग बार्क वाले ज्यादा माइंड ही नहीं करेंगे, मतलब उस चीज पे तेरे को जज ही नहीं किया जाएगा कि फिर तू अटक रहा है। बट तू जो चीज जवाब दे रहा है वो जवाब सही होना चाहिए। कोई चीज को सोच रहा है तो अच्छे से सोच, कुछ में डाउट है तो तू उनसे पूछ भी सकता है, तो वो चीज को बस स्ट्रॉन्ग रखना, तो उस चीज के कारण तेरे को वहां ही सुनी है। ऑल द बेस्ट देन, कुणाल। थैंक यू।